आ गया आप सभी? देखिए हमने देखा है what it means to be a function or what it means by a function to be continuous at a particular point. That means locally हमें पता है what is continuity. अब हम इस चीज को globally पहले define करेंगे. मैं आपको बताऊंगा what we mean by a function to be continuous on the whole space. और ये अगर आप देखेंगे it will be मतलब एक ना एक natural extension होगा. Actually, for a function to be continuous on the whole space, we require the function to be continuous at each point of the space. So that means ये जो global definition है continuity की, will define this in terms of the local one. ठीक है, पहले हमने इसको locally define किया था. We defined what we mean by a function to be continuous at a particular point. एक particular point पर continuity से हम क्या समझते हैं, हमने पहले वो define किया था. आज मैं आपको पहले बताऊंगा what it means to be what it means for a function to be continuous on the whole space. पहले आप सबसे पहले यही लिखिए. We'll note this as a definition. Let xd and yd be two metric spaces and f be a mapping from x into y. Then this mapping f is said to be, we say it's continuous, is said to be continuous on the space X if and only if and only if this f is continuous. If and only if the criteria is this, if and only if f is continuous at each point of capital X. Okay, so this is what we mean by a function to be continuous on the whole space. What we mean by a function to be continuous on X. The criteria is it should be continuous at each point of X. If it is continuous on capital X, then take any arbitrary point in capital X, function will be continuous at that point. So this is what we mean by continuity of a function on the whole space. अब यहाँ आप एक डेफिनेशन पहले नोट करिए. होम्योमॉर्फिज्म. लेट ऐसे लिखिए पहले. Let xd and yd be two
metric spaces, and f from x into y be a mapping full stop. Then this mapping f, then f is said to be a homeomorphism. This is not homomorphism, this is homeomorphism. इसका ख्याल करिएगा. Homeomorphism. So this f is a homeomorphism if and only if इसके लिए कुछ requirements हैं. तो पहली requirement है वो ये है कि this function f, it must be a bijection. The second requirement is f and f inverse, they must be continuous. That means f and f inverse, they both must be continuous. देखिए जब आप यहाँ पहले ही कहते हैं ना f is a bijection, when I say f is a bijection, it means f inverse exists. Bijections are invertible, so therefore f inverse exists. So I can speak of f inverse. And the second requirement is the function f and its inverse, which exists by requirement first, because f is a bijection, so f inverse exists. And the second requirement is the function f and its inverse, they must be both continuous. ठीक है. अब यहाँ देखिए आप, अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे ना, ये वाली डेफिनेशन, इसको देखिए आप, यहाँ से हमें पता चलता है कि for a function to be continuous on the whole space, it must be continuous at each point of the space, है ना? It must be continuous at each point of the space. And we know what it means to be a function to be continuous at a particular point. ठीक? आपको यहाँ ना थोड़ा सा इन चीजों को एक तरह से समझ लीजिए assemble करना है. जो चीजें आपको पता है उनको आपको assemble करना है यहाँ पर. पहले आप ये देखिए, for a function to be continuous on the whole space, we mean it should be continuous at each point of x. अगर ऐसा है, then it's said to be continuous on x, if it is continuous at each point of x. So that means ये फिर वही locally फिर ये सारी चीजें आ जाती है. Continuity on capital X means continuity at each point of x, right? और एक particular point पर हमें पता है कि what is continuity, उसको हमने open set से भी capture किया है continuity को. We captured the continuity at a particular point using the epsilon delta definition, and we also captured the continuity in terms of the sequences. ठीक, तो हमें उसके 3 equivalent criteria पता है continuity at a particular point के. ठीक, अब मैं यहाँ चाहता हूँ आपसे, पहले आप मुझे बताइए what should be the epsilon delta definition or what should be the epsilon delta criteria for a function to be continuous on the whole space. वैसे देखिए, if f from xd into yd be a function
which is continuous on X, which is continuous on X, full stop. Then for each little x in capital X and for each epsilon positive, you आप कह रहे हैं यहाँ पर कि that it is continuous on the whole space, so that means it must be continuous on at each point of the space. अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, I'm taking in a little x in capital X. Since f is continuous on capital X, it must be continuous at this little x also. So therefore by the epsilon delta definition, for every epsilon there will be a delta. मैं वही लिखने जा रहा हूँ. For each epsilon positive there exists this delta positive, और ये मैंने दिखाया है आपको. This delta positive in general it depends upon epsilon as well as it depends upon the point x. It depends upon epsilon as well as the point x. ये दोनों पर डिपेंड करता है in general, such that the distance between f of x and f of u, this will be less than epsilon whenever the distance between x and u, that means whenever u is delta close to x. Whenever u is delta close to x, its image is epsilon close to the image of x. तो ये होगा फिर, अगर ये continuous है on the whole space, then for each little x in capital X and for each epsilon positive, you must be able to find a delta positive. And this delta it depends upon epsilon as well as little x. और फिर ये होगा उसके लिए. This distance will be strictly less than epsilon whenever the distance between the points is strictly less than delta. ठीक, ये होगा. And conversely, अगर आप ये कर सकते, then the function must be continuous at little x, and if you can do for each little x, then the function must be continuous on the whole space x. Right? Because यही तो है ना criteria for a function to be continuous on the whole space. और ये हमने देखा है कि this epsilon delta criteria it amounts to continuity. जब मैंने वो equivalent criteria वाली theorem आपको दिखाई थी, मैंने आपको दिखाया था उसमें कि this amounts to continuity. अब यहाँ मैं आपको ना एक चीज आपके जहन में डालना चाहता हूँ, वो ये है कि the dependence of this epsilon on the point x. In general, this delta it depends upon epsilon पर तो depend करेगा ही करेगा, and it also depends on the point x जहाँ की आप अभी बात कर रहे हैं. फिलहाल के लिए we are speaking about this little x, और in general this delta जो इस epsilon के corresponding आता है, it depends upon x also. Now there are certain scenarios where this delta it depends only upon epsilon, ये खाली epsilon पर depend करता है, और ऐसे सिनेरियो में हम कहते हैं the function is uniformly continuous. मैं वो भी लिखने जा रहा हूँ. If this delta depends only on epsilon, then we say the function is uniformly continuous on the space capital X.
और यहां से आपको समझना है दिस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी। मैं कह रहा हूँ इट्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन द whole space X. So this uniform continuity is actually a global property. और अगर आप इस एप्सिलॉन डेल्टा में अगर आप इसको कैप्चर करेंगे इस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को तो इसकी ये होगी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। Thus for a function f from xd into yd to be uniformly continuous function to be uniformly continuous comma for each epsilon positive there exists a delta positive and this delta depends only on epsilon, depends only on epsilon or such that इसमें ये होगा such that the distance between the images of 2 points fx and fu it will be strictly less than epsilon whenever the distance between x and u is less than delta. So this is the epsilon delta criteria for a function to be uniformly continuous. अगर आप इसको कंपेयर करेंगे विद द ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी डेफिनेशन जो एप्सिलॉन डेल्टा की जो ऑर्डिनरी डेफिनेशन है ना कंटिन्यूटी की सॉरी जो डेफिनेशन है ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी की जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी की अगर आप इसको उसके साथ कंपेयर करेंगे आप मुझे बता सकते हैं कि डिफरेंस कहाँ कहाँ पर है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको दिस इज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे विद द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी आप मुझे बता सकते हैं कि डिफरेंस कहाँ कहाँ पर है। सर वहाँ भी हम पॉइंट पे डिफाइन कर रहे थे वो नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना आप इसको यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं पॉइंट्स डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे वहाँ पे डिपेंड होते हैं पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी में आपका आंसर कुछ हद तक सही है अगर आप थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करेंगे ना। देखिए दिस इज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी। ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी में सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि जो डेल्टा है आपका इट डिपेंड्स ऑन एक्स आल्सो इट डिपेंड्स ऑन एक्स आल्सो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप x चेंज करेंगे डेल्टा विल चेंज सो दैट मीन्स इट देन बिकम्स दिस x बिकम्स फिक्स्ड देन। अब आप इस x को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते बिकॉज वंस यू चेंज x डेल्टा विल चेंज बिकॉज डेल्टा डिपेंड्स ऑन x। वेयर एज जो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है इसमें जो डेल्टा है आपका इट डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन। ठीक तो एक तो होगी पहली डिफरेंस ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी में जो डेल्टा है इट डिपेंड्स अपॉन बोथ इट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन एज वेल एज x द पॉइंट whereas in uniform continuity delta depends only on epsilon तो ये होगी पहली डिफरेंस। अब जो दूसरी डिफरेंस है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए जब आप यहाँ कहते हैं ना डिस्टेंस बिटवीन fx fu is less than epsilon whenever the distance between x and u is less than delta यहाँ आपके पास दो पॉइंट्स है x and u but they are of different nature। यहाँ जो x है ना it is fixed
whereas this is arbitrary in some sense. U पर as such कोई restriction नहीं है. It simply has to be delta close to x. तब जाके आपकी जो images होंगी they will be epsilon close. तो in a way आप कह सकते हैं यहाँ पर this x it's fixed whereas this u it's arbitrary. On the other hand अगर आप uniform continuity में देखेंगे क्या लग रहा है आपको? अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी दो पॉइंट्स है x and u बट यहाँ दोनों आर्बिट्री है, यहाँ कोई फिक्स्ड नहीं है. रीजन इज यहाँ आप x को भी चेंज कर सकते हैं. ऊपर वाली ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी में आप x चेंज नहीं कर सकते बिकॉज द मोमेंट यू चेंज x डेल्टा विल चेंज. तो ये जो फिर है ना ये क्राइटेरिया ये फिर सही नहीं होगा बिकॉज द मोमेंट यू चेंज x डेल्टा विल चेंज. सो यहाँ आप खाली u चेंज कर सकते हैं, x को आप चेंज नहीं कर सकते. वेयर एज नीचे जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है यहाँ आप दोनों चेंज कर सकते हैं. यहाँ आप x भी वैरी कर सकते हैं और u भी वैरी कर सकते हैं. यहाँ दोनों वेरिएबल्स है x and u. Neither of these x and u are fixed. ठीक है, तो ये दोनों मतलब एक तरह से समझ लीजिए दे आर आर्बिट्री. और सिंपली आप कह रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है फॉर अ फंक्शन टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस वो ये है कि whenever the points are sufficiently close, आप देखिए whenever distance between x and u is less than delta, that means whenever the points are sufficiently close their images can be made arbitrarily close because epsilon is arbitrary, so you can make the images arbitrarily close by taking points sufficiently close. तो that means in a way then uniformly continuous functions में क्या होता है? Uniformly continuous functions में इस तरह की चीज होती है. Sufficiently close points x and u अगर इनके बीच में distance less than delta है then the distance between their images will be less than epsilon. So that means in case of uniform continuity sufficiently close points have sufficiently close or have close images. If you take two points which are sufficiently close then their images also will be close. This is a remarkable property of uniformly continuous functions. ठीक, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड इफ यू टेक टू पॉइंट्स व्हिच आर सफिशिएंटली क्लोज देन देयर इमेज will also be close. This is not true for an ordinary. This is not true for a function which is continuous in the ordinary sense. ये मैं आपको इसकी एग्जांपल अभी थोड़ी देर में दूंगा जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि that this is indeed not true for functions which are continuous but which are ordinary which are continuous in the ordinary sense. उनके लिए ये इस तरह की चीज ट्रू नहीं होती है in general. अब यहाँ एक और चीज आप समझ लीजिए. सिंस मैंने आपसे कहा कि यहाँ x और u ये दोनों इन अ वे आर्बिट्री है. अब अगर आप यहाँ ऐसा करेंगे फिर फिक्स x एंड वैरी u, अगर आप x फिक्स करेंगे एंड u को वैरी करेंगे it then reduces or it then transforms to the criteria for the function f to be continuous at x. अगर आप x फिक्स करेंगे ना, if you fix x here then this criteria it reduces to the criteria for a function to be continuous at the particular point x. So therefore if a function is uniformly continuous then it is continuous at each fixed x. So that means uniformly continuous functions are also continuous. That means every uniformly continuous function is a continuous function. If it is uniformly continuous on the capital X, on the space X, then it is continuous on X. समझ रहे हैं मेरी बात कैसे? Because यहाँ जो x और u है ना, they are both arbitrary. Now if you fix x, तो फिर ये जो criteria है ना, this criteria, it reduces to the criteria for f to be continuous at x. Now if the function is uniformly continuous, अगर ये uniformly continuous है, तो फिर ये वाली चीज ये fulfill होती होगी. So ये फिर इस scenario में भी fulfill होती होगी when x is fixed. But in this scenario, it means that the function is then continuous at this x. Now this x it can be any point in the space because x is also arbitrary. So मैं आपको इसको essentially किसी भी point पर fix कर सकता हूँ इस x को. So that means the function is that
is then continuous at every point in your space. Okay, so every uniformly continuous function is continuous also, but converse is not true. इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा पहले. Consider this function f of x equal to 1 over x on the set 0 1. अगर आप देखेंगे 0 1 में this is a perfectly valid function. It makes sense in 0 1. इसकी बस एक ही possible problem है, that is at 0 1 by x की. But 0 is not in our domain, so this function it makes sense in 0 1. Not only it makes sense, it's continuous on 0 1. Why? Because quotient of two continuous functions is continuous whenever the function appearing in the denominator is non-zero. अब यहाँ जो function है आपका denominator में वो है x, and x on 0 1 open interval 0 1 is non-zero, so therefore this function is continuous. मैं लिख रहा हूँ ये clearly. F is continuous on 0 1. अब आप क्या करिए, अब ये लीजिए, अब let x be equal, ये ध्यान से देखिएगा, let x be equal 1 by 2 power 1000, ठीक, and u be equal 1 by 2 power 10,000. Then अगर आप देखेंगे ना यहाँ x and u they are close. है ये close, देखिए आप 1 by 2 power 1000. It will be something which is close to 0. Well, because we are taking 1 by 2 raised 1000. पहले 2 raised 1000 जो है ना, it will be an enormous quantity. और फिर आप इसका रेसिप्रोकल ले रहा है, so that means it will be close to 0. इसी तरह से अगर आप इसे देखेंगे 1 by 2 raised 10,000, this also will be close to 0. Both are close to 0, so that means it could be close होंगे फिर, ठीक, by triangle inequality of distances. ठीक, so आप देख सकते हैं यहाँ पर कि in some sense this x and u they are close, है ना. अगर आप अभी क्लोजनेस से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या करिए, यहाँ 2 zeros ऐड करिए, यहाँ भी 2 zeros ऐड करिए. So I am taking 1 by 2 raise 100,000 और यहाँ मैं ले रहा हूँ essentially 1 by 2 raise million. इसमें 6 zeros आ रहे हैं ना, हाँ, so it's million, 10 lakh. So obviously they are close, है ना. But the moment you go to their images, if I ask you what is f of x, 2 power. Yes. देखिए f of x is 1 by x. f जो है ना, ये एक पॉइंट को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, इसको इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करता है. Now in our case our x is 1 by this, so f of x means f of 1 by 2 power 100,000. By definition of f this will be 2 raised power, because यहाँ इसका रेसिप्रोकल होगा ना, तो it will be 2 raised power 100,000. ठीक, इसी तरह से अगर आप f of u को देखेंगे, it will be f of 1 by 2 raised million, and by definition of f it will be 2 raised million. अब क्या करें, आप इन इमेजेस को कंपेयर करिए. दिस इज 2 to the power 100,000 and this is 2 raised power 1 million. अगर आप इनको देखेंगे, they are very very apart from each other. इनके बीच में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे ना, ये एक इनॉर्मस डिस्टेंस आती है.
एंड द मैटर ऑफ द फैक्ट इज, अगर आप देखिए मसला यहाँ है ना, अगर आप यहाँ सपोज आप जो x है, सपोज इफ यू टेक, अगर इसमें आप 3 और जीरोस ऐड करेंगे तो इमेज में भी यहाँ 3 और जीरोस ऐड करेंगे हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप u में, इसमें भी अगर आप से 3 जीरोस और ऐड कर रहे हैं तो यहाँ इसकी जो इमेज है उसमें भी 3 और जीरोस ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ जो आप जीरोस ऐड कर रहे हैं ना x में और u में, उससे क्या होता है, दे कम फर्दर क्लोज टू ईच अदर, बट ऑन दी अदर हैंड जो इमेजेस है ये फर्दर अपार्ट हो जाती है। आप देखिए तो ये जो पॉइंट्स है ये एक दूसरे की ओर आ रहा है, ये दे आर वेरी क्लोज, बट देयर इमेजेस दे आर इनकी जो इमेजेस है वो क्लोज नहीं है एक दूसरे को। Although the function is continuous, the function f, it is continuous on 0 1. This x and this u, they are both points in 0 1, but their image, they are not close. X and u are close, but their images are not close. अगर आप यहाँ देखेंगे ना, एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पर वो है द फंक्शन f, it is not uniformly continuous. इसीलिए आपको ये यहाँ इस तरह की चीज नहीं मिल रही है। Although x and u are close, their images are not close. तो it seems to be a problem, मतलब there are points which are very close. अगर आप यहाँ इस x और इस u को देखेंगे, they are very close to each other. But the moment you take their images, the images are इनके बीच में काफी distance है इन images में। और जो problem है, it is actually the non-uniform continuity, because your function f is not uniformly continuous on 0. तो ये जो मैं आपसे यहाँ कह रहा था ना, क्लोज पॉइंट्स ऑफ क्लोज इमेजेस, ये इस तरह की प्रिविलेज आप खाली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस में हासिल होती है। If your function is uniformly continuous, then close points are close images. अगर आप दो पॉइंट्स देंगे which are close, then their images also will be close. In general ऐसा नहीं होता. This is an example. Here x and u, they are close, but the moment you take their images, the images are not close. इसको आप मतलब ज्यादा ना बेहतर तरीके से इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप suppose you take this, let's take a sequence, let's take xn, n running from 1 to infinity in 0 1, where xn is equal, say, 1 by 2 power n, okay? और उसके बाद let's take another sequence un, n running from 1 to infinity, again in the interval 0 1, and let's suppose in this case un is equal to 1 by, say, 10 power n, for n equal to 1 2 so on, और यहाँ भी for n equal to 1 2 so on. अब अगर आप xn और uns को देखेंगे ना as a sequence, xn and this sequence un, they both converge to 0. xn it goes to 0 as n goes to infinity, और यहाँ भी वही है। अगर आप un को देखेंगे, uns they also go to 0 as n goes to infinity. In fact, these xn's they are decreasing to 0, है ना? Similarly, अगर आप uns को देखेंगे, they are also decreasing to 0. मतलब this sequence of uns, it's a monotonically decreasing sequence which converges to 0. Same is the case here. It's a monotonically decreasing sequence which converges to 0. uns as well as xns, they are decreasing to 0. So that means these points uns and xns, they are marching towards 0. They are coming towards 0. ये 0 की ओर आ रहा है, xns and uns. तो क्लियरली अगर आप फिर इनके बीच में डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन xn एंड un अगर आप देखेंगे,
इसको आप by triangle inequality, ये जो distance है ना between xn and un, you can write this to be less than or equal to, using the triangle inequality, this is less or equal distance between xn and 0 plus the distance between 0 and un. Now this distance between xn and 0, this goes to 0 as n goes to infinity. Why? Because the sequence xn, it's converging to 0. So therefore the distance between xn and 0, it will be 0 in the limit. Same is the case here. The distance between 0 and un, it will go to 0 in the limit because un also converges to 0. So both these distances, they converge to 0 in the limit. So their sum also converges to 0. So this plus this, it goes to 0 as n goes to infinity. तो देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि this point and this point, इनकी जो distance है, in the limit it is 0. आपको ये दिखा रहा हूँ. Limit n goes to infinity, the distance between xn and un, this is 0. So that means in the limit, this point x and this point un, they are very close to each other. ठीक? But अगर आप अब इनकी images को अगर आप देखेंगे, अगर आप compute करेंगे distance, ये तो आप पहले आपने देखा, in the limit, distance between xn and un, this is 0. So point xn or point un, for large values of n, they will be very close. Because in the limit, the distance between these 2 points, it's 0. ठीक? अब आप क्या करिए, आप इनकी जो images है उनकी distance देखिए. You compute the distance between f of xn and f of un. What will be this distance? What's f of xn? Xn is 1 by 2 power n. So f of xn will be 2 power n. So say asking the distance between f of xn and f of un, it means the distance between 2 power n and f of un. Un is 1 by 10 power n. F of un will be 10 power n. So it will be the distance between 2 power n and 10 power n. And since we are using the usual metric, so this will be mod of 10 power n minus 2 power n, which is equal to 10 to the power n minus 2 to the power n. Now 10 to the power n minus 2 to the power n, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. It can be written as, because it's 10 to the power n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. I can write this as 2 power n into 5 power n. और उसके बाद आप फिर ये 2 power n कॉमन ले सकते हैं, तो आपको ये मिलेगा 2 power n times 5 to the power n minus 1. अब मुझे बताइए इसको क्या होगा as n goes to infinity. As n goes to infinity, अगर आप इस क्वांटिटी को देखेंगे जो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रही है, it will go to infinity. Infinity. इसके साथ जो फैक्टर है 2 power n, this also goes to infinity. So overall this goes to infinity as n goes to infinity. आप देखिए आपको यहाँ एक fascinating चीज देखने को मिल रही है, और वो चीज ये है, पहले आपको पता है your function is continuous on 0 1, है ना. u and xn, they are sequences in 0 1. xn and un, they are in 0 1, right. इसके बाद अगर आप लिमिट देखेंगे between xn, between sorry, if you see the distance between xn and un, in the limit it is 0. So that means points xn and points un, they are coming close to each other, है ना, because the distance is 0 in the limit. So ये जो xn's है और जो un's है, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक, because in the limit their distance is 0, but the moment you take their images, distance between f of xn and distance between f of un, that means the moment you take the distance between their images, आप देख रहे हैं कि जो distance between their images है, it's going to infinity.
तो दैट मीन्स डोमेन्स सेट में इस तरह की चीज है जो एक्सेंस है। अगर आप इसको ना इस तरह से, ये जो है ना, ये फैक्ट दैट इन द लिमिट द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड यू एन इज जीरो, अगर आप इसको पिक्टोरियली देखेंगे, इसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये होगी। सपोज these are x n's, or suppose these are u n's. Now x n's and u n's, they are coming close to each other because in the limit their distance is zero. तो x n's और u n's में इस तरह की रिलेशनशिप होगी, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। x n's और u n's एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, है ना, बिकॉज इन द लिमिट देयर डिस्टेंस इज जीरो, तो एक दूसरे के करीब आ रहा है ये इस तरह से, ये लाइंस एक दूसरे की ओर आ रही है to emphasize the fact that x n's and u n's in the limit their distance is zero. But अगर आप इनकी इमेजेस को देखेंगे, उनमें क्या हो रहा है, उनमें इस तरह हो रहा है, ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, f of x n और f of u n, ये एक दूसरे से दूर, they are deviating from each other. The distance between their images is going to infinity as n goes to infinity. तो पॉइंट्स एक दूसरे की के close आ रहा है, the points are coming closer and closer to each other, but their images are going away and away from each other. तो ये एक तरह से ये fascinating है ना, why? Because your function is continuous. और फिर इसमें इस तरह की चीज का होना ये थोड़ा सा अजीब लगता है। Because the function is supposed to be continuous, तो इसमें इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए थी। इसमें इस तरह की चीज इसलिए हो रही है because though it's continuous but it is not continuous strongly. ये बस ना एक ऑर्डिनरी सेंस में कंटिन्यूअस है, और इसीलिए आपको यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस में ऐसा नहीं होगा। इफ योर फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो उसमें इस तरह की चीज आप कभी नहीं देखेंगे। उसमें अगर पॉइंट्स क्लोज आ रहा है तो उनकी जो इमेजेस है वो भी फिर इवेंचुअली क्लोज ही होंगी। तो दिस इज, ये थोड़ी सी मैंने पहले एक यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिखाई बिटवीन ordinary continuity and uniform continuity. In terms of the definition, जो इनके बीच में जो difference है वो ये है। In case of uniform continuity, जो delta है it depends only on epsilon. एक और definition आप note करिए, isometry. Let xd and yd be two metric spaces and f be a function from x into y, comma, then this function f is said to be an isometry. We see the function f is an isometry if and only if this thing happens. If and only if the distance between f of x and f of u, this is equal to the distance between x and u. We see a function acting between two metric spaces xd and yd is an isometry if and only if the distance between images is same as the distance between the points. अगर ऐसा है, we say the function is an isometry. इसकी एक एग्जांपल आप देखिए। Consider f from R with the usual metric into R with the usual metric.
मतलब डोमेन स्पेस और कोडोमेन स्पेस में दोनों में मैं R ले रहा हूँ with the usual metric. Domain spaces are with the usual metric and codomain spaces also are with the usual metric. और मान लीजिए the function is defined by this f of x is equal say x plus alpha where alpha is some real number. ठीक. Now if you take 2 points for x comma u in your domain space that means which is R, अगर आप 2 पॉइंट्स लेंगे R में और फिर अगर आप इनके बीच में जो इनकी जो इमेजेस है और उनकी इनके बीच में जो डिस्टेंस है उन इमेजेस के बीच में अगर आप उसे लेंगे दैट मींस इफ यू डू दिस इफ यू कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस ऑफ x and u since you are using actually the usual metric so the distance will be because in the codomain space you are using the usual metric so this distance it will be mod of f of x minus f of u which is equal to what's f of x it is x plus alpha so it will be mod of x plus alpha minus f of u it will be u plus alpha so minus u then since यहाँ minus है तो ये plus alpha minus alpha में बन जाएगा in the mod plus alpha minus alpha ये खत्म हो जाएगा so this will be mod of x minus u and mod of x minus u is actually the distance between x and u because आप domain space में भी usual metric ही use कर रहे हैं so that means यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह की mapping में if your function is of this form then the distance between images is same as the distance between the points so therefore the function is an isometry thus f is an isometry अब इसमें ऐसा क्या है ये आप याद रखिएगा it's actually a translation f of x equal to x plus alpha it's a translation every translation is an isometry if you take a translation from R into R it's actually an isometry so this is an example of an isometry on the other hand अगर आप इसे देखेंगे f of x equal to x square again अगर आप इस f को देखेंगे from R with the usual metric into R with the usual metric this f if you take f of x to be x square it's not an isometry why simply अगर आप ये देखेंगे let's take x to be 1 and u to be say 2 अब देखिए what is the distance between x and u what is this distance between these 2 points 1, 1 what is the distance between their images 3, image of x under f will be 1 and image of u under f will be 4 4, and the 3. distance between 1 and 4 is 3 so the distance between the points is not equal to the distance between the images so the function is not an isometry because for a function to be an isometry the distance between the points it should be same as the distance between the images अब ये जो आइसोमेट्रीज होती है ना दे आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ये कैसे देखेंगे आप उसमें कोई ज्यादा मसला नहीं है सपोज f is an isometry और आप क्या करिए let epsilon greater than 0 be arbitrary then the distance between f of x and f of u this will be less than strictly less than epsilon if and only if yeah since we in case of continuity we only require it to be one directional तो मैं आप इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर then this is less than epsilon अब जो मैं लिख रहा हूँ ना वो आप उसकी logical validity check करिएगा मैं मान रहा हूँ function is isometry फिर मैं आपसे कह रहा हूँ this distance it will be less than epsilon whenever मैं फिर से कह रहा हूँ आपको logical validity check करनी है whenever the distance between x and u is less than epsilon क्या मैं सही हूँ अगर मैं ऐसा कहता हूँ
Yes, sir. Because why? Because the distance between x and u, it is same as the distance between f of x and f of u, because your function is an isometry. तो मैं इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ this distance is less than epsilon whenever this distance is less than epsilon. अब आप क्या करिए, let's take delta to be equal to epsilon. ठीक, now you are taking delta to be equal to epsilon. What's epsilon? Epsilon is positive, so delta is positive. And इसमें एक और चीज है, since you are taking delta to be equal to epsilon, so delta depends only on epsilon. Depends. हाँ depends, but only on epsilon, वो ज्यादा important है. Depends only on epsilon. तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, given an epsilon positive, there exists a delta which is also positive, such that the distance between fx and fu, it will be less than epsilon whenever the distance between x and u is less than delta. So that means it is uniformly continuous, because यही तो है ना definition of uniform continuity. So every isometry is uniformly continuous. If you have an isometry from x into y, it's uniformly continuous. अभी कितना टाइम है आपकी क्लास में? सर हो गया टाइम. सॉरी, सर टाइम हो गया. चलिए ठीक है, आप जाइए फिर. ओके सर. हम फर्दर कल से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे इंशाल्लाह.